Hello friends, welcome back to our channel for Tech Online. Today we are discussing the FSSAI CBT 2 exam for CFSO and TO. The topic is food preservation, processing and packaging and subtopic is emulsion. आज डिस्कशन करेंगे emulsion के बारे में। ये क्लास 3 है, इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Among the structure forming unit within food, emulsion play a major role. Emulsion मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग के लिए फूड के। दे आर नोन टू इम्पार्ट डिजायरेबल mouthfeel characteristic to the food, but in addition they are key ingredient in formation of structure in certain products such as whipped topping, ice cream and more complex products such as processed cheese. Emulsify mouthfeel characteristic को बढ़ाता है इन फूड। emulsify प्ले रोल करता है इन इंग्रेडिएंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर फूड के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि व्हिप टॉपिंग, आइसक्रीम और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और प्रोसेस चीज में ये मदद करता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। Therefore, the understanding of information, structure and properties of emulsion is essential to creation and stabilization of structure in food. Emulsion essential है क्रिएशन स्टेबलाइजिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फूड के लिए। टाइप्स ऑफ emulsion, टाइप्स ऑफ emulsion के देखेंगे अभी। An emulsion is a suspension of one phase in another in which it is immiscible. Emulsion फर्स्ट फेज में सस्पेंशन रहता है और अनदर फेज में फर्स्ट फेज immiscible हो जाता है. Once of the phase exists as a discrete drop suspension in a second continuous phase, there are the interfacial layer between two phases which is occupied by some necessary surfactants materials. फर्स्ट फेज जो इमल्शन का है वो डिस्क्रीट ड्रॉप्स में रहता है और सस्पेंशन हो जाता है सेकंड फेज में जो कंटिन्यूस रहता है, और इन दोनों फेज में इंटरफेशियल लेयर फॉर्मेशन होते हैं। उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एक नेसेसरी सर्फेक्टेंट्स का यूज किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इमल्शन विच आर इम्पोर्टेंट एंड पोटेंशियल सो इन फूड। इमल्शन के 4 टाइप्स है जो यूज के लिए जाते हैं फूड में। अब देखेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर सस्पेंडेड इन aqueous continuous phase. aqueous continuous phase में ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में सस्पेंडेड हो जाता है। दिस आर द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ द इमल्शन टाइप्स। ये ऑयल इन वाटर जो इमल्शन है ये इमल्शन टाइप्स का मोस्ट वर्सेटाइल है। they exist in many form like a mayonnaise, cream liqueur, creams, vapor topping, ice cream mixture. many फूड में यूज किया जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, जैसे कि mayonnaise, cream liqueur, creamer, vapor topping and ice cream mix. And their property can be controlled by varying both surfactants used and the component present in aqueous phase. ऑयल इन वाटर इमल्शन का यूज किया जाता है एज अ सर्फैक्टेंट्स। वाटर इन ऑयल इमल्शन आर typified by the butter, margarine and fat based spread in general. ऑयल इन वाटर इमल्शन का ज्यादातर उपयोग बटर, मार्गरीन एंड फैट बेस्ड स्प्रेड फूड में ज़्यादा यूज किया जाता है। दिस डिपेंड फॉर देयर स्टेबिलिटी मोर
1. The property of fat and oil. फैट एंड ऑयल पर के प्रॉपर्टी पर इमल्शन डिपेंड रहता है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड रहती है. The surfactants used then in the property of the aqueous phase, and because of this there are the favor parameters which can be varied to control their stability. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे वाटर इन ऑयल इमल्शन हो रहा है. अब देखेंगे वाटर ऑयल वाटर इमल्शन. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये वाटर है, इसके अंदर ऑयल है और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में वाटर है. इसी वजह से इसको कहा जाता है वाटर ऑयल एंड वाटर इमल्शन. The third of emulsion types of water in oil in water, which is the in effect on oil in water emulsion. Those drops themselves contain water drops. These are the most difficult emulsion to produce and control because of water drops contained in the oil drops must be stable as must the oil drops contained in the continuous phase. Oil, water, oil emulsion. The four types of emulsion is oil in water in oil emulsion, which is double emulsion system. ये ऑयल इन ऑयल वाटर ऑयल emulsion का फोर टाइप्स है. उसमें डबल emulsion सिस्टम है इन विच डिस्पेयर फेज, जो डिस्पेयर फेज है ऑयल इन वाटर है और emulsion है, एंड द कंटिन्यूस फेज है ऑयल और प्लास्टिक फैट. ऑयल और प्लास्टिक फैट एक कंटिन्यूस फेज है. Because of its limited application in food product, ऑयल emulsion के लिमिटेड एप्लीकेशन है फूड प्रोडक्ट में. comparatively limited work in be done on the oil and water emulsion. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ऑयल वाटर एंड ऑयल emulsion हो रहा है. अब देखेंगे emulsifying agent. Emulsifying agent are soluble in fat. Emulsifying agent soluble रहता है फैट एंड वाटर में एंड अलाउ करता है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ फैट इन वाटर. यूनिफॉर्मली डिस्पर्शन करता है फैट को वाटर में. Emulsifying agent are also called as emulsifier. Emulsifying agent को emulsifier कहा जाता है. And the presence in the food like a butter, mayonnaise and salad dressing. बटर, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग में emulsifier का यूज किया जाता है. These have one hydrophilic and one लियोफिलिक पार्ट. emulsifying एजेंट में one हाइड्रोफिलिक और one लियोफिलिक पार्ट रहता है. This agent surround the oil drops in water and reduce the tension between the two liquids. Those impart stability. Emulsifying एजेंट के को ऑयल सराउंडेड रहता है इन वाटर एंड reduce करता है टेंशन को between two liquids. Those impart the stability. Classification of emulsifying agent. This emulsifier make the protective sheet around the drops. Drops के को protective sheet बनाता है emulsifier. Give the drops the charge so that they are repel each other and swell to set up the viscosity of liquid.
Natural one are derived from natural emulsifier derived from uh, vegetable, animal, synthetic, semi-synthetic से नेचुरल emulsifier बनता है. Although natural agents are natural emulsifier agents are inexpensive रहते हैं, safe रहे हैं and non-toxic भी है, but these are slow in action. But natural emulsifier agent है slow in action में रहते हैं. Function of emulsifying agent. The use of food emulsifier began with the production of margarine as monoglyceride and lecithin. These compounds were commonly called as emulsifier. Monoglyceride and lecithin को emulsifier कहा जाता है. Generally speaking, as a emulsifier is the compound with emulsifying effect. However, actually it has various functions. Emulsifying agent का various function है and emulsifying effect भी है. कहाँ पर यूज किया जाता है देखेंगे. For example, to modify oil crystal and prevent water spattering in cooking. आइसक्रीम में भी यूज किया जाता है emulsifier. An emulsifier does not promote the emulsification, but rather destroy the emulsion to stabilize the foam and to make a product with smooth texture and shape keeping property. आइसक्रीम को स्मूथ टेक्सचर और शेपिंग कीपिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है emulsifier. ब्रेड में भी यूज किया जाता है emulsifier का. An emulsifier react with protein to make a smooth, easy resin dough with no relation to emulsification. Emulsification. There are two types of emulsion. Oil-water emulsion are oil drops in water which can be found in ice cream and milk. आइसक्रीम और मिल्क में ऑयल इन वाटर इमल्शन फाउंड होता है. एंड वाटर ऑयल इमल्शन आर वाटर ड्रॉप्स इन ऑयल फाउंड इन बटर एंड मार्गारीन. बटर और मार्गारीन में वाटर इन ऑयल इमल्शन फाउंड होता है. रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ water types emulsion are water dispersed within oil drops of oil water types emulsion. Oil water oil types of an opposite types emulsion has been progressive. जो कि oil water oil types of emulsion है ये progressive है. This type emulsion not only make the low calories. emulsifying का यूज लो कैलोरी फूड बनाता है जैसे कि क्रीम which contain less oil, but also stabilize the emulsion by dissolving unstable substance present in deepest region of water drops. emulsion stabilize करता है unstable substance को जो present है deepest region of water drops में. इस स्लाइड में आप देख सकते हो emulsifying agents. टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में हाँ देख सकते हो कि इमल्शन डिस्पेयर फेज है लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड. सो इसका यूज इमल्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है. मेयोनेज़, ऑयल, सलाद एंड क्रीम. और सॉलिड इमल्शन में आप देख सकते हो डिस्पर फेज है लिक्विड और डिस्पर्शन फेज है सॉलिड. तो इसका यूज किया जाता है सॉलिड इमल्शन का बटर एंड चीज में. अब देखेंगे इमल्शन के रिलेटेड क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. वाटर ऑयल इमल्शन इज कॉल्ड एज ए
aqueous emulsion, B. oily emulsion, C. alcoholic emulsion, D. इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका आंसर है बी ऑयली emulsion। क्वेश्चन 2, any two immiscible liquid when mixed form an A. aerosol, B. emulsion, C. gel, D. sol। इसका आंसर है बी emulsion। क्वेश्चन 3, milk is an emulsion in which A. acid particles are dispersed in water, B. base particles are dispersed in water, C. water particles are dispersed in oil, fat, D. liquid fat particles are dispersed in water। इसका आंसर है C. water particles are dispersed in liquid fat। Question 4. What is the process of separating emulsion into its constituents called? A. Emulsifying agent, B. Centrifugation, C. D. Emulsification, D. uh, emulsification। इसका आंसर है C. D. emulsification। Question 5. Which of the following is not an example of water in oil emulsion? A. Cod liver oil, B. butter, C. cold cream, D. milk। इसका आंसर है D. milk। For more video, link in description for daily updates and study material, our Telegram and Instagram channel. So subscribe our channel, share with your friends. Thank you.